All right, so today we'll be starting off with the lecture of molecules and covalent bonds. Now we know what is a molecule. A molecule is formed when two atoms combine together, and when two atoms combine together, more than two atoms combine together. Let's say one atom of carbon, if combines with two atoms of oxygen, it can form a molecule of carbon dioxide. This is a molecule. If two Cl atoms combine together, they form a molecule known as Cl2. If two bromine atoms combine together, they form a molecule of bromine as well. And there are many types of molecules. We have a monatomic molecule, we have a diatomic molecule. डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज टू, फॉर एग्जांपल Cl2 है, फिर हमारे पास Br2 है, हमारे पास फ्लोरीन है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज टू एज वेल। वी हैव आयोडीन एज वेल। जब भी मैं आयोडीन कहूंगा उसका मतलब है I2 है। ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज टू, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही इन द फॉर्म ऑफ डायटॉमिक करता है। नाइट्रोजन विच इज N2N H2 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं ऑफ 7 diatomic elements which are always existing as in the form of two atoms combined together. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Hmm. Can rest of you hear me? Abdul Hafiz, Asher, Muhammad Khan. Hello. Yes, बाकियों की आवाज आ रही? Yes, बाकी rest of the people can hear me. Muhammad, kindly rejoin the meeting and check what's the issue going on. So if we talk about covalent bonds, ठीक है, covalent compounds are formed when electrons are shared between atoms. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब एक नॉन मेटल कंबाइन करते हैं नॉन मेटल से, वी से अ कोवेलेंट कंपाउंड हैज बीन फॉर्म, एंड दिस हैपेंस बाय द sharing of electrons. Only non-metal elements participate in covalent bonding, and as in ionic bonding थोड़ी फर्क होती है। Ionic bonding जो होती है that is always between a metal and a non-metal, उसको हम कहते हैं ionic bonding। But जो covalent bonding है, covalent bonding will always be between a non-metal and a non-metal। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है विच इज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच एटम gains a full outer shell of electrons. When two or more atoms are chemically bonded together, we describe them as molecules. So here you can see nitrogen is bonded with three atoms of hydrogen over here, और उसके पास एक लोन पेयर है बिकॉज नाइट्रोजन इज इन ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 नाइट्रोजन का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले नाइट्रोजन को तीन और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एंड हाउ डिड ही गेट 3 इलेक्ट्रॉन? जब उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, तो नाइट्रोजन की भी अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। और हाइड्रोजन का भी जो पहला शेल है वो भी इन सब का कंप्लीट हो चुके हैं व्हेन दे ईच हैव टू टू इलेक्ट्रॉन्स नाउ इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो वी से कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टेकन प्लेस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। This is another example of covalent bonding taking place between two atoms of hydrogen where they both required 1 इलेक्ट्रॉन each, और अब बॉन्डिंग के बाद इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इधर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एज वेल। क्लोरीन भी एक और एग्जांपल है। अब क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 में आता है विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों क्लोरीन को कितने कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल? दे बोथ नीडेड वन वन मोर इलेक्ट्रॉन। और वो वन वन मोर इलेक्ट्रॉन कब आया? जब उन्होंने दोनों क्लोरीन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एंड ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ ऑफ द क्लोरीन एटम्स नाउ have what? 8 electrons each. Okay, moving on. आपके पास वाटर है। अब वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल वेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास ग्रुप नंबर 6 में है। ग्रुप नंबर 6 का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास होंगे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, मतलब कि ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो और इलेक्ट्रॉन। और अब वो दो और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? अगर वो दो हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ये हाइड्रोजन भी शेयर करे, एक ये हाइड्रोजन भी शेयर करे, ताकि ऑक्सीजन जो एक आपके पास सेंट्रल एटम है, इट नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों हाइड्रोजन्स का भी काम हो गया। बोथ ऑफ दी हाइड्रोजन्स ऑल्सो नाउ हैव अ कंप्लीट डुप्लेट। डुप्लेट हम कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोथ हाइड्रोजन्स हैव अ कंप्लीट डुप्लेट एंड ऑक्सीजन हैज अ कंप्लीट
ऑक्टेट नाउ। कंप्लीट डुप्लेट और कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से नाउ दे हैव आल्सो बीन पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर एक और एग्जांपल हमारे पास ये CH4 की। अब जो कार्बन है CH4 के अंदर, कार्बन आपके पास आता है ग्रुप नंबर 4 में, विच मीन्स दैट कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, ताकि उसके पास भी कंप्लीट ऑक्टेट हो जाए। एंड टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट, वो आपके पास कितने और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है? इट बॉन्ड्स विद 4 मोर हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पास शेयर कर लिया है। और जब चारों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके शेयर कर रहे हैं, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल इज नाउ कंप्लीट विद टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एक एक हाइड्रोजन का भी जो डुप्लेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? गुड जॉब। फिर एक आपके पास एग्जांपल वही नाइट्रोजन की आ गई, बॉन्डिंग विद 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, जो हमने डिस्कस किए। ये एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब क्लोरीन हमने अभी बताया था, ये ग्रुप 7 में आता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलके एक शेयर कर लेता है तो क्लोरीन का काम भी हो गया। इट ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का काम भी हो गया। नाउ हाइड्रोजन ऑल्सो हैज अ कंप्लीट डुप्लेट। डुप्लेट क्या होता है? जिसके कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोशन में। और इसका क्लोरीन का अब हो गया है कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब है दैट द क्लोरीन नाउ हैज 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म कब होते हैं? जब आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और आयोनिक बॉन्डिंग हमने कवर किया था मंडे वाली क्लास के अंदर, कि आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान होता है? अशर, कैन यू टेल मी वे हाउ इज एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड? अशर, नवीद, एक्सप्लेन मी व्हाट इज आयोनिक बॉन्डिंग। अशर, Yes, sir. हाँ जी बताओ। Ionic bonding is formed with the metal between metal and non-metal, and ठीक it है, has electrostatic force of attraction. अमेजिंग। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते थे और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था नॉन मेटल। मेटल्स के ऊपर Yes, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। और इन and ऑपोजिट sir, they चार्जेस have की also वजह से, formed electrostatic force of हाँ, attraction. They have also. एग्जैक्टली, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते थे। तो Yes, आयोनिक कंपाउंड्स की फिर प्रॉपर्टीज भी कुछ ऐसी ही होंगी ना, जैसे कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे आर ऑल्सो नॉट वॉलेटाइल। नॉट वॉलेटाइल का मतलब कि वो इतनी आसानी से एवेपोरेट भी नहीं करते हैं। और मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो वाटर soluble, as both ionic compounds and water are polar। और आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कट कब कंडक्ट करते थे? जब वो लिक्विड स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, मतलब कि व्हेन दे आर इन अ मोल्टन स्टेट, सिर्फ तब ही आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ओनली तब ही उनके पास फ्री आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन मूव एंड कैरी द चार्ज। वो हीट भी तभी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी तभी कंडक्ट करेंगे व्हेन दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस टू कैरी द चार्जेस। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने कहा, अच्छा नवीद, हाउ आर कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड? so covalent compound formed by metal between metal and रॉन्ग formed by non-metal but ना, non-metal. व्हेन नॉन मेटल बॉन्ड्स विद नॉन मेटल, तब क्या बनते हैं? The covalent compound. कोवेलेंट। और कोवेलेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। The transfer of electrons. Uh, um, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। गॉट इट? लिसन वेरी केयरफुली टू द it क्लास, अभी हमने किए हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? बिटवीन, hovering a bond between non-metal and non-metal, and they share uh, plus two. अभी हमने पीछे कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स? कैन यू टेल मी ऑल द एग्जांपल्स? Yes, hydrogen CH. Um, गुड जॉब। Have they now covalent bonds? Covalent compounds have low melting and boiling points. So covalent compounds are usually liquids or gases at room temperature. They are usually volatile, which is why many covalent organic compounds have distinct aromas, and they are usually not water soluble, as covalent compounds tend to be non-polar, but they can dissolve in organic solvents. They cannot conduct electricity as all electrons are involved in bonding, so there are no free electrons
or ions to carry the charge. So that is what we have talked about molecules and covalent compounds. ये कोई भी covalent molecule जो होगा वो कैसे बनेगा? By covalent bonding. और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू वो कंपाउंड्स बना देते हैं। कंपाउंड्स में हमने देखा ना, एमोनिया कंपाउंड देखा है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को देखा है, हमने मीथेन को देखा है, CH4। दीज आर द कॉमन कंपाउंड्स दैट यू कैन बी आस्क्ड इन द पेपर एज वेल। एंड हाउ यू हैव टू शो द कोवेलेंट बॉन्डिंग बाय द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सो यू कैन शो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन एक और मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन आपके पास ग्रुप नंबर 5 में आता है। तो अशर नवीद, कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मोर डज नाइट्रोजन नीड? क्योंकि अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और कितने चाहिए इसको? सर 3। 3 चाहिए, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन को 3 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे? सर 3। इस वाले नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले नाइट्रोजन ने यस भी सर। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो टोटल यस। इन्होंने आपस में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इन्होंने आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और इसको हम कहते हैं इन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया। अब आप देखो दोनों नाइट्रोजन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मीनिंग दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। एन एग्जाम्पल वी हैव ऑफ इथीन एज वेल, जहाँ पे दोनों कार्बन्स को 4 4 चाहिए थे, ठीक है। दो दो तो उन्होंने आपस में शेयर कर लिए, और बाकी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास इन हाइड्रोजन से आ गए हैं। तो एक कार्बन को जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसने एक इधर शेयर किया, दूसरा इधर, और तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन उसने इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिया था। दिस इज another example of covalent bonding forming an ethene molecule compound. Then we have methanol example as well। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे that this carbon again needed 4 electrons। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आ गया, one was shared over here, third electron was shared over here, fourth electron was shared with this oxygen। फिर ऑक्सीजन ग्रुप 6 में था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो एक उसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और एक उसने, मैंने बताया जैसे, कार्बन के साथ शेयर किया। तो दिस वाज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक लाइन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। 2 लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड, और 3 लाइंस का मतलब हो जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अब आप देखो सारी सिंगल लाइंस हैं, मीनिंग दैट अ सिंगल बॉन्ड वाज फॉर्म्ड ओवर हियर बिटवीन दीज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन किस ग्रुप में आता है आपके पास? ग्रुप नंबर 4 में। दोनों ऑक्सीजन किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 6 में। कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए, इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए। अब आप देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, कार्बन नाउ ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बोथ ऑफ द ऑक्सीजन्स ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये एग्जाम्पल है किसकी? डबल बॉन्ड की। That how in the carbon dioxide molecule a double bond is formed between carbon and both of the side oxygens। Ionic compounds की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्योंकि ionic compound is the type of bonding between metal and non-metal। Any example? Ashar Naveed, can you give me any example of an ionic compound where a metal has bonded with a non-metal? Ashar Naveed, give me an example. सर Any example where a metal has bonded with a non-metal is an example of ionic compound. Give me an example. हमने उस दिन पढ़ी है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। दीज आर व्हाट? दे आर ऑल एग्जांपल्स सर ऑफ आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड्स। याद आ रही है या नहीं? एंड ये सब याद है। गुड। फोकस फोकस, ठीक है, मैं भी बार बार पूछता रहूंगा सवाल। Ionic compounds have high melting and boiling points. This is because the oppositely charged ions in the lattice structure are attracted to each other by strong electrostatic forces which hold them firmly in place। और ionic compounds के high melting and boiling points क्यों होते हैं? Because large amounts of energy are required to overcome the high melting and boiling point
की फोर्सेस होती हैं। इसलिए जो सिंपल कोवेलेंट सब्सटेंसेस होंगी सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, उनमें बेशक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी वीकर होंगी, एंड दैट इज व्हाई दे आर हैविंग लेस मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। दे वुड बी वेरी वीक कंडक्टर्स, और वो इंसुलेटर्स की तरह ज्यादा यूज होते हैं ना। इनकी क्या है, दे आर लाइक वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से दे रिक्वायर वेरी लेस हीट और एनर्जी इन ऑर्डर टू मेल्ट हो या मेल्ट करना हो या बॉयल करना हो। इनको बहुत कम हीट रिक्वायर होती है। लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, सो दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द आयोनिक कंपाउंड। समझ आया अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग? Ashan Naveed, can you tell me what is covalent bonding and how is it different from ionic bonding? The covalent bonding is a convert of non-metal, and non-metal, and ionic bonding is also convert into metal and non-metal. And the ionic bonding examples are NaCl, MgCl. They are example of ionic bonding and covalent bonding. Exactly. और इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है अब्दुल हफीज? What is the difference between the properties of ionic compounds and covalent compounds? Myra, Mohammad Khan, what are the differences between the properties of ionic bonding and covalent bonding? इन दोनों compounds में क्या फर्क आता है इनकी properties में? Sir, in ionic compound, they have high melting and boiling point, while covalent bonding, they have low melting and boiling point. Good job. Okay. Covalent bonds. In this video, you are going to learn about covalent bonds, how they are made, and how they form. If you haven't seen it already, first have a look at our video, Structure and Bonding. Only the noble gases exist naturally as single atoms. All the other elements of the periodic table have partially filled valence shells or outer electron shells. Atoms bond by swapping or sharing electrons in their outer shells. When very different atoms react, like metals and nonmetals, they normally swap electrons. This is ionic bonding. But when similar atoms react, like nonmetals combining with other nonmetals, they share electrons. This is covalent bonding. Nonmetals are found on the right-hand side and upper part of the periodic table. Some common nonmetals are carbon, nitrogen, oxygen, and the halides. They have shells of electrons that are normally half or more than half full of electrons. Since they have a strong attraction for a few additional electrons, it is energetically unfavourable for them to lose electrons, so they share electrons by overlapping orbitals. This makes a bonding orbital, or covalent bond, that contains two electrons. If there is space in the outer shell, a non-metal atom can form double or triple bonds, like in oxygen or nitrogen. In the displayed formula of a compound, we represent a covalent bond with a straight line, like this. We can also represent a covalent bond as a dot and cross diagram. These diagrams show only the valence electrons. To learn more about dot and cross diagrams, watch our video on dot and cross diagrams. Covalent bonds are directional, which means they are in a fixed position, like holding hands. This is different from ionic bonds, which are formed with an electrostatic attraction between charged ions. The overlap between orbitals means that the atoms in covalent bonds are very close. These things make covalent bonds strong. There are two kinds of covalent structure: small molecules, like water, and giant compounds, like diamond. Because the electrons in the bonds are evenly shared, bonds are not polarized. There is little attraction between molecules, and forces between molecules are weak.
Compounds made from small covalent molecules have low melting and boiling points and are volatile. They also don't conduct electricity. Carbon and silicon tend to form giant covalent compounds. These bond in the same way, but instead of forming small molecules with 1 or 2 bonds, they form 4, making up huge lattices or chains of many, many linked up atoms, the basis of the organic chemistry of carbon or the chemistry of rocks. One common example is diamond, which is made of carbon. Each carbon atom forms 4 covalent bonds because it has 4 electrons in its outer shell to share and has space for 4 more. If every carbon atom forms 4 bonds with 4 other carbon atoms, and each of these forms 4 bonds with 4 other carbon atoms, and each of these forms 4 bonds, we very quickly end up with a very large structure. These compounds have very high melting and boiling points because you have to break covalent bonds rather than intermolecular forces to make them free enough to act as liquids or gases. The covalent bonds hold them rigidly in place in the giant lattice. Allotropes of nonmetals bond covalently. Allotropes are different structures of the same element. You can learn more about these in our video, Allotropes of Nonmetals. So to finish, here is a challenge for you. Which of these compounds are covalent? Pause the video for a moment whilst you think. Have you considered their physical properties and where the elements come from on the periodic table? Solved it? Okay. The answer is all of these compounds are covalent. Carbon dioxide, carbon monoxide, and methanol are all small molecules. Organic molecules form covalent bonds between hydrogen and carbon. C70 is a fullerene, a carbon molecule shaped like a rugby ball, closely related to the Buckminster fullerene. Silicon dioxide is a giant covalent structure and just like diamond, but has oxygen atoms bridging between 4 coordinate silicon atoms. Hopefully, you now feel confident identifying covalent compounds and recognizing their properties. All right, is everything clear?